Hello and welcome back to another episode of Off the Mark. Today is a very sad day. India has lost to Australia by 10 wickets and they have leveled the series 1-all. So इस episode में हम basically review करने वाले हैं test match, India की क्या problems हैं, how we can improve and the key performers throughout this test match. So first of all, let's just summarize what happened in this match. Of course, पहले India scored 180 runs, which was उधर 180 भी पहुंचते पहुंचते उनकी गैस निकल गई थी. तो उसके बाद Australia responded with 337 with a standout performance by head. 140 रन बनाए उधर. After that, India again couldn't capitalize on their batting. 175 बनाए. फिर से थोड़ा इधर उधर करके with Nitish Reddy contributing the most runs. And 19 runs to get. Australia were able to do it without any worries. So, what do you think, Arnav? To say the least, it's been a humiliating defeat. हमारे लिए everything that could go wrong went wrong in this match. From our bowling, Bumrah did well, of course. Siraj also was decent, but then Harshit Rana, we backed him. He was very very disappointing. Um, हमारे ऐश की बात अच्छे से नहीं करी. क्या कहते हैं, और हमारे बाकी बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, Rohit Sharma, captain, and he looked out of sorts, to be honest. Virat Kohli, coming off 100 in the last game, we would have expected responsible batting from him, much more responsible batting than what he did. In the first innings, आते ही वो ODI T20 की तरह खेल रहे थे, मैंने जो देखा. In the second innings, थोड़ी application दिखाई, but again fiddling outside the off stump, वो discipline नहीं था. तो वही बात है. Again, the biggest question marks will go to our senior pros, Virat Kohli and Rohit Sharma, without any doubts. कि भाई, why are they not performing? What's wrong with them? And काफी लोग तो कह रहे हैं, is this the end? तो इस पे भी डिस्कस करेंगे. तो वही बात है तो यार. हम्म. हम्म, तो हम बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाते हैं विद द इंडियन टीम. हम तो यूज्ड टू हो गए हैं हम एट दिस पॉइंट. सही बात है. One up and then the next match you are getting all out for 180 in both innings. You're not able to get anybody out in the other side. तो ये तो अब हर साल की बात हो गई है. But I'm hoping they can bounce back from this. They can forget this. I think the 10-day gap actually helped Australia more than India. क्योंकि Absolutely. फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद सारा मोमेंटम इंडिया के साथ था. बट ड्यू टू द 10-day gap, ऑस्ट्रेलिया के पास टाइम था to recover, to forget the loss, and they were able to basically switch the momentum back. And because the next test match is only in 5 days, now it will be very difficult for India to get that momentum back and give a fitting reply to Australia. Absolutely. By the toughest thing I think which will be is to again, देखा जाए तो for us, the momentum which we had beating them by 300 odd runs, everything went well for us in that match. In the first match it was like perfect fairy tale for India कि आओ आप ऑस्ट्रेलिया की फोर्ट्रेस में, ऑप्टिस स्टेडियम में, पर्थ में जाके उन्हें हराओ, और हराओ नहीं, उन्हें ह्यूमिलिएट करो. But Australia, bhai, they were never going to like be slow in this match, and like they were always going to fight back, I would say. And as we also said in the preview, them not fighting back would have been a surprise for us, and they absolutely did fight back. उन्होंने वो 300 रन का एकदम इक्विवेलेंट विक्ट्री, मतलब उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग विक्ट्री दी इंडिया को, मैं तो बोलूंगा. आई थिंक बहुत मतलब ऑफ कोर्स इस मैच के बाद बहुत सारे कॉजेस फॉर कंसर्न होंगे, बट वन स्टैंड आउट परफॉर्मर, वन पॉजिटिव इन दिस डार्क टेस्ट मैच फॉर इंडिया विल बी नीतीश कुमार रेड्डी. मतलब एब्सोल्युटली. व्हाट अ परफॉर्मर. उसने दोनों इनिंग्स में इंडिया को एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल टोटल्स तक वो लेके गया है. दोनों इनिंग्स में 42 बनाए हैं. आई डोंट नो इफ दैट इज सम कर्स और समथिंग कि 42 बनाता है वो. बट ही हैज हैड द हाईएस्ट स्कोर आई थिंक इन बोथ इनिंग्स. और Yeah. yeah, both Yeah, innings. yeah. Yeah, For India in both innings, he was the highest run scorer. yeah. So that just shows कि आपका एक नया player
जो अभी आया है टीम में, who's batting so low, he is taking the responsibility, something that the other top order batsmen aren't doing. So Nitish Kumar Reddy has really come out of this test match as a hero for India and somebody who can be in the Yeah. squad for the next few years. And by the way he is batting, it's not like वो लग ही नहीं रहा कि lower order batsman है. हम तो खुद discuss कर रहे थे that he should probably bat in the top order in like he should bat two spots higher. With the way he's batting, he's looking absolutely untroubled. मतलब वो जब out भी हुआ है ना दोनों innings में, तब जाके out हुआ when he had no other option than to hit every other ball, because उसको बस runs बनाने Right. थे तब. Because पहली इनिंग में वो स्टार्क को गुड लेंथ बॉल को मारते हुए आउट हुआ. फिर सेकंड इनिंग्स में Mm. वो जो नॉर्मली उस बॉल को डक कर देता उसने अपरकट कर दिया स्ट्रेट टू फ्लाई स्लिप. सो मतलब Mm. आई वुड से वो दोनों ही इनिंग्स में he looked untroubled up to that point. And even in the last Mm. match he looked so good in both the innings in fact. एंड उसके कुछ शॉट्स मतलब देख के लग रहा था क्या बात है, कुछ कवर ड्राइव्स मार रहा था, कुछ रिवर्स स्वीप्स मार रहा है, अपर कट शॉट्स मार रहा है, फुल Full शॉट्स मार shot. रहा है, फुल कंप्लीट बैट्समैन ही वाज लुकिंग. एंड ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं थी, एज यू सेड लोअर ऑर्डर बैट्समैन तो लग ही नहीं रहा था. ही वाज समबडी हु कुड प्रॉब्ली बैट एट 3-4. दैट्स हाउ गुड Yeah, ही वाज लुकिंग आउट. But at the end, the person who was able to get him out was Pat Cummins. Let's talk about him yeah. also. 5 wickets. हम बात कर रहे थे कि how he was not himself in the first test match, but he's given us and all the fans a fitting reply. So let's talk Yeah. about him a little bit. What do you think? भाई पैट कमिंस की तो जितनी बात करो उतनी कम है. पैट कमिंस द बॉलर एंड द कैप्टन. लाइक जब हम लास्ट मैच में बोल रहे थे दैट द जस्ट लाइक व्हेन ही केम आउट टू द टॉस, उसकी जैसे ऑस्ट्रेलिया टॉस हारी उसकी शक्ल मुरझा गई थी. तो उसके बाद से दैट मैच जस्ट वेंट डाउनहिल फॉर हिम. From his bowling perspective also, he looked the flattest Australian bowler in that game. He was not looking Mm. threatening at all, right? And इस मैच में वो आता है. First innings में he hits his straps immediately. Second innings में specifically, the way he started bowling in that twilight period, this delivery to Rohit Sharma, top of off, trademark Pat Cummins delivery, just shows you कि Pat Cummins is well and truly back. Bhai, the way he was bowling in this match, the pace, the rhythm specifically. And this morning उसने जिस तरीके से इंडिया के प्लेयर्स को शॉर्ट बॉल पे आउट किया है, the Mm. consistency with which he was hitting this shoulder level, the head level, and मतलब जब इंडियन प्लेयर्स को ट्रबल कर रहा था भाई वो शॉर्ट बॉल से, तो just shows you कि Pat Cummins, the strategist, the captain, the bowler, the player, हाउ ही इज सो Right. गुड कि अगर उसमें इतनी क्लास है कि एक मैच वो थोड़ा डाउनहिल जाएगा भी ना, तो उसको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है दैट व्हाई ही इज द बेस्ट टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एंड व्हाई ही विल कीप कमिंग बैक. He is definitely champion player, champion bowler, champion captain. मतलब he is somebody you want to have in your team when your backs are against the wall. वो एब्सोल्युटली. क्लच प्लेयर है, वो तब तुम्हें परफॉर्मेंस देगा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है. तो आज और कल पूरे टेस्ट मैच में he has shown his class. He has gotten a comeback from the first test and फाइफर लेके जो उसके विकेट्स थे, जो उसकी बॉल्स थे, जो उसकी कंसिस्टेंसी थी, वो it was absolutely outstanding and world class. तो एब्सोल्युटली फाइन. अमेजिंग स्पेल फ्रॉम पैट कमिंस. yeah. Now let's talk about something a little controversial, something that happened which has been in the media also. Siraj versus Head. The send off that Siraj gave Head when he got him out, a Yorker, very good Yorker, out या for 140. Siraj gave him a send off. Travis Head, maybe they exchanged a few words. What do you feel about that? Was that reaction needed from Siraj, or do you think it was warranted? देख आई वुड से दैट सिराज हमें पता ही इज एन अग्रेसिव प्लेयर. उसका माइंडसेट है होता है कि मतलब ही ऑलवेज गोज फॉर द विकेट्स. वो कभी भी रन रोकने नहीं जाता. दैट इज समथिंग वी नो अबाउट मोहम्मद सिराज. एंड इन दैट ओवर ट्रेविस हेड एक्चुअली टुक हिम ऑन. ही हिट अ फोर अगेंस्ट हिम, देन एक सिक्स सिक्स मारा था, एक फ्लिक Hmm. मारा था. तो सिराज वाज पम्प्ड अप कि भाई अब तो आउट करना पड़ेगा बिकॉज़ इंडिया आल्सो नीडेड दैट विकेट. He bowled a good ball to get rid of him. And pehle to, as what we saw in the replays and between the conversation, Siraj was actually celebrating. And then, as per what Travis had said, उसने बोला well bowled to Siraj in a sarcastic manner, which Siraj did not like. तो उसके Right. बाद सिराज ने भी he pointed towards him going to the shed, मतलब गुस्से से कि Hmm. भाई जा निकल यहाँ से. तो वही बात थी कि सिराज का वो रिएक्शन
मतलब थोड़ा, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो जाता है। हम भी स्कूल लेवल में क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, और ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, द स्टेक्स आर सो हाई, तो आ जाता है गुस्सा। आई वुड नॉट से एनीथिंग, मतलब आई वुड से कि इतना अग्रेशन, आई वुड से दिस हैज एक्चुअली फ्यूल्ड दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इवन मोर, दिस हैज मेड I इट agree. इंटरेस्टिंग, I बिकॉज agree up ये जो इन दोनों के बीच का हुआ है ना, this will not stop here, this will go ahead in the further series as well. I think to it. this will actually make the series much more interesting. The only thing I didn't like was, चलो ठीक है, सिराज ने अग्रेशन दिखाया, ही गॉट हिम आउट ऑलरेडी, चौका छक्का मारा था उसने उसी ओवर में। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा फास्ट बॉलर का जो माइंडसेट एटीट्यूड है उसका, वो ऐसी रिएक्शंस देता है, एंड दैट्स ओके। बट द Hmm. थिंग इज, ठीक है, ही इज इन द ऑपोजिशन, he has scored 140 runs against you, he has batted all day, he has batted exceptionally. तुम्हारी Yeah. टीम से एटलीस्ट कुछ लोगों को तो जाना चाहिए, थोड़ा तो अप्रिसिएशन दिखाना चाहिए कि यू हैव वेल Well. प्लेड मेट, यू हैव डन अ गुड जॉब, क्या इनिंग्स खेली है, वी वर टोटली आउटक्लास्ड, मतलब थोड़ा लिटिल बिट देयर शुड बी व्हिच कम्स इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, कि you respect your opponent, कि you have played a absolutely amazing innings that will be remembered for years. Hmm. That thing was missing. Maybe if it didn't come from the bowler, it could have come from some of the senior players, maybe the Yeah. captain Rohit Sharma or आई Virat थिंक Kohli. मे बी अनदर रीजन फॉर दैट कुड हैव बीन कि जब दोनों के बीच में इतनी हीटेड मामला हो गया था, तो किसी को बीच में घुसने का मन नहीं किया कि हम हाँ, बेफालतू में वो ना हो जाए, क्योंकि फिर अगर क्या हो सकता था कि रोहित या कोहली में से कोई जाता कुछ बोलता, तो ट्रेविस हेड भी भाई, उसका भी, वो भी गुस्सेल आदमी है, वो भी उसे कुछ बोल देता, तो फिर वो थोड़ा, इट वुडंट हैव लुक्ड गुड, सो शायद दैट कुड हैव बीन अ रीजन। yeah, but overall, it wasn't a great look in terms of respect and in terms of compassion. But ओवरऑल हाइप के लिए जो हाइप बन रहा है इस मोमेंट की वजह से, जो फेरोसिटी बन रही है, जो राइवलरी बन रही है, दैट आई थिंक ऑल फैंस विल बी एक्साइटेड फॉर, बिकॉज एज यू सेड इट ओनली एड्स टू द फायर ऑफ दिस बीजीटी सीरीज, एंड वी विल सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस मोमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सीरीज एज वेल। इनकी राइवलरी चलती रहेगी, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस। ट्रूली ट्रूली, मतलब दिस जस्ट मेक्स बीजीटी बीजीटी, बिकॉज हम देखते हैं ना कि इतना अग्रेसिव मोमेंट्स, ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया हैज बीन द वन जो इंडिया को स्लेज करता है, डोमिनेट करता है, और हमने देखे यार इतने सारे इंसिडेंट्स, मंकी गेट इंसिडेंट्स, रेसिज्म और ये सारी चीजें, बट नाउ एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स स्टार्टिंग अप एंड स्टैंडिंग अप फॉर देयर ओन इज समथिंग आई एम रियली लाइकिंग as time is moving forward. Let's now talk about India's batting, which has become a really huge cause for concern. Apart from 2-3 innings in the last 5-6 test matches, they have mostly gotten out for low scores, Yeah. mostly 200 से नीचे, Hmm. 150 180 के range के round में, not able to chase even targets like 120 or 150. Yeah. So this thing has become a real issue that they have to take seriously, क्योंकि अगर तुम्हारे को वर्ल्ड क्लास टीम बनना है, तुम्हारी बॉलिंग तुम्हारे को हमेशा कैरी नहीं कर पाएगी, तुम्हारी बैटिंग को भी स्टेप Yeah. अप करना पड़ेगा, एंड दे Absolutely. weren't able to step up at all in this test match. So भाई what do you वही think? है, इंडिया की आप बैटिंग देखो तो मतलब यार कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब विराट कोहली को आप देखते हो, पहले आते थे एट मतलब व्हेन विराट कोहली यूज्ड टू कम इन एट 20 फॉर 2 15 फॉर 2 वाले सिचुएशंस इन 2018 2019, हमें लगता था भाई चलो अब थोड़ी देर तक विकेट नहीं जाएगी, एटलीस्ट कोहली विल होल्ड वन एंड अप, वहां से रन आते रहेंगे, बाकी वी Hmm. जस्ट नीड समवन टू सपोर्ट हिम। बट अब यार इवन रोहित शर्मा, पहले एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इन द लास्ट 3-4 years, he has given us loads of assurance. But in the last 1 year, Rohit Sharma का भी test performance has been below par. He like in the last 12 test innings उसके कुछ 150 test runs है, मतलब 10 12 15 की average है उसकी कुछ। Even Virat Kohli we have seen उसकी last 4 years में कुछ 32 की average है। Last 1 year में also he has some mid 20s average. So for two of your best players in the team to be going through this slump, it is not good at all. With their age and all those factors, बहुत सारे debates चल रहे, that is this the end, but हमने ये कल भी discuss किया था कि भाई let's give them time. पूरा सीरीज है ये, 5 match long series, विराट कोहली is coming off a century in the third test, रोहित शर्मा I am also sure that भाई he'll do well, he should do well, because ऑस्ट्रेलिया में the pace bounce, he likes pace on the ball. पहला मैच था ये, चेंज ऑफ पोजीशन एंड एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट मैच में शुड मूव टू द टॉप ऑफ द ऑर्डर बैक अगेन, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करो। दिस Hmm. वोंट वर्क फॉर रोहित शर्मा आफ्टर प्लेइंग सो लॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर।
moving back to the middle order isn't so easy. I agree. बिकॉज रोहित शर्मा जैसा प्लेयर ना, ऑल्सो मैंने ये भी देख लिया इस मैच में कि द डिफेंसिव गेम कांट वर्क फॉर हिम, वो डिफेंड डिफेंड कर करके नहीं सर्वाइव कर पाएगा, उसका डिफेंसिव Hmm. गेम चला गया। ही शुड प्ले अटैकिंग द वे ही डिड। उसको याद करना चाहिए कि कैसे उसने स्टार्क को मारा था T20 वर्ल्ड कप में, उससे ही थोड़ी इंस्पिरेशन लेके ही शुड जस्ट हाँ, कंटिन्यू इन दैट अटैकिंग फ्लो। मतलब ऑफ कोर्स T20 की तरह नहीं, बट बॉल के मेरिट पे थोड़े शॉट्स मैन्युफैक्चर करके, बिकॉज देखो अगर आप डिफेंसिवली ऐसे अगर आपने आउट होना ही है ना, तो उससे अच्छा थोड़ा अटैक कर लो, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को प्रेशर में डाल दो, बिकॉज इफ रोहित शर्मा स्टार्ट्स अटैकिंग द गेम विल गो टुवर्ड्स इंडिया ओनली, ये हमें पता है। the thing is, Rohit Sharma should definitely go back to the opening spot. उधर वो या रोहित एंड जायसवाल ओपन कर सकते हैं। फिर वन डाउन गिल इज लुकिंग रियली रियली गुड, बट वो बड़े स्कोर में अपनी जो स्टार्ट होती है, ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिग स्कोर, एंड वो इसको I'm not करना too पड़ेगा। worried about Gill, honestly. I think Gill will get a big innings in the next match, because he's looked very good. He's looked the best Indian batter, I think, in the list this match for sure. Hmm. The way he was batting, he was looking very very good. Especially in the second innings, भाई उसको ये जो ball मिली ना, उस पे उसको तो मैं ज्यादा blame नहीं करूंगा. That was almost unplayable from mid start. जो लेट स्विंग हुआ, अंदर आके सीम भी हो गया, मिडिल स्टंप हिट किया, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टंप इट swung back in. दैट वाज अ प्रॉपर मिचेल स्टार्क डिलीवरी, और उसको बहुत ही मतलब वो तुक्के से ही बच सकता था। और मतलब तो गिल के बारे में आई एम नॉट टू कंसर्न, सेम विद जायसवाल। थोड़ा ऑफ टेस्ट मैच था उसके लिए, बट आई एम श्योर ही विल कम बैक वेल इन द नेक्स्ट मैच। व्हाट आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इज कि जो हमारे तीन प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। केएल राहुल भाई पहले मैच के बाद उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है टू गो बैड, पहले मैच में ही सो गुड, इन एवरी सेना टूर्नामेंट ही स्कोर सो मेनी रन्स, बट आफ्टर दैट जो उसके पहले मैच में उसकी एवरेज है कुछ 50-55 की, आफ्टर दैट दैट एवरेज डायरेक्टली ड्रॉप्स टू 20-25। एंड वी सॉ दैट इन दिस मैच उसकी 20, उसने एक मैच इनिंग्स में चलो ठीक खेला, बट सेकंड इनिंग्स में ही वाज हॉरिफिक। फर्स्ट इनिंग्स में आल्सो वो तो नसीब अच्छा था कि बच गया चलो, बट ओवरऑल केएल राहुल पे आई एम वेरी वरीड कि अब वो उसका विल ही बी एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, चाहे वो टॉप ऑफ द ऑर्डर में हो या आई थिंक इट वुड बी इन द मिडिल ऑर्डर, बट वो देखना पड़ेगा यार, बिकॉज these three really need to perform for you to have a good tour down under. Yeah. So yeah, so Shuman Gill of course looked really good, but I agree, ये थ्री जो टॉप सीनियर प्लेयर्स है तुम्हारे, अगर ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो क्या ही स्कोर बना पाओगे तुम। हमेशा यू कांट रिलाई ऑन नीतीश कुमार रेड्डी। So Yeah, next, let's also talk about India's worries with the pink ball. Of course, Australia बहुत ज़्यादा खेलती है pink ball के साथ, at least once a year they play. India yeah. doesn't play that much, and even at home when they play with the SG ball, Hmm. not the Kukapura in Yeah. Australia. So they don't have that much experience with the pink ball, and that shows. इधर Hmm. they are not, इधर पिंक बॉल के साथ क्या होता है, यू हैव टू ऑलवेज बी इन, यू कांट Yeah. लेट डाउन योर गार्ड, क्योंकि द बॉल विल ऑलवेज डू समथिंग थ्रू आउट द इनिंग्स, इवन Yeah. इफ यू आर 30-40 ओवर्स इन। तो ये चीज इंडिया नहीं समझ पाई, क्योंकि केएल राहुल एंड शुभमन गिल व्हेन दे वर इन, तब दे हैड टू रियली बी फोकस्ड ऑल द टाइम, क्योंकि जैसे ही उनका Hmm. विकेट गिरा द बैटिंग कोलैप्स स्टार्टेड। तो ये Absolutely. सारी चीजें has to taken into consideration. You have to start slow with the pink ball. You have to work through your innings, and you have to always stay focused. ये चीजें Well, एक lack of experience show करती हैं इंडिया में, and they will have to rectify even this. with the ball, the way we were bowling, matlab, we were not consistently hitting the areas. Our especially Harshit Rana and even Bumrah, bhai Bumrah की वो consistency नहीं थी इस मैच में. Bumrah was not at his best. Matlab, that just shows you कि even not being at his best, Bumrah is getting you 4 wickets. That is how good of a bowler he is. And Bumrah मतलब was at his best. He just had to bowl a lot of overs, and that's why नहीं मैं end में वही थोड़ी नहीं नहीं consistency. my point is that in the first day जब हम twilight में bowling कर रहे थे, ऑन द सेकंड डे सॉरी, जब हम ट्वाइलाइट में बॉलिंग कर रहे थे तब बुमराह एंड इवन ऑल ऑफ बॉलर्स, भाई हमने उस इनिंग्स के स्टार्टिंग में ना ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 25-30 रन तो 22 के चौके दे दिए थे। Hmm. तो जो 86 रन उन्होंने स्टंप्स पे मारे थे उसमें से 25-30 रन तो 22 के थे बाउंड्रीज। तो दैट इज वो कंट्रोल मिसिंग था स्पेशली हर्षित राणा सिराज से। तो हाँ. वो मतलब दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न दैट हाउ योर बॉलर्स
will actually step up when Bumrah is not bowling, because वो आपको भाई दिन के 90 के 90 ओवर तो नहीं करा के देगा ना, of course. Right. And now moving on to that, bowlers की बात करते हुए, Mohammad Shami ka comeback. Rohit Sharma gave us a hint in his press conference, where he said that they are monitoring his progress. He's playing the Syed Mushtaq Ali Trophy. He played the Ranji Trophy as we talked yesterday. And while playing this match, he got some swelling in his knee. So उससे उसकी his preparation became a bit delayed, and that is why to come and play in test match they need to be very careful and sure कि Hmm. nothing goes wrong, कि मतलब वो आए और फिर उसकी कोई मसल सोर हो जाए or something like that, because then Mohammad Shami is your key bowler. You don't want Hmm. him to come get an injury and then जो Champions Trophy में you need him, then next year England series and all of those things. Shami तो चाहिए ना आपको अभी, because अभी you don't have that control pacer, someone to complement Bumrah the way he did, and he will. तो what do you think, Nirvan? क्या लग रहा है शमी के बारे में अब, because we need him actually. हाँ तो शमी ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द टीम, बट हम रश नहीं कर सकते उसको, क्योंकि Yeah, अगर हमने रश किया तो उसकी इंजरी वर्सन हो सकती है एंड फिर दैट कुड बी अ करियर एंडिंग इंजरी, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी yeah. क्वाइट ओल्ड. तो आई Hmm. डोंट थिंक वी वांट टू रश हिम. वी विल हैव टू ट्रस्ट जो भी हमारे नए बॉलर्स हैं, जो भी स्क्वाड में हैं, मे बी प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, हर्षित राणा, दे विल हैव टू स्टेप अप, क्योंकि शमी इफ ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ नॉट अवेलेबल एंड यू कांट रश दैट. तो रोहित हाँ. शर्मा ने भी बोला है, दे आर मॉनिटरिंग हिम, ही इज प्लेइंग सैयद मुश्ताक अली. बट लेट्स जस्ट वेट a little bit. Let's allow these young players to show themselves, to prove themselves on the big stage. And I'm hoping they are able to perform in the third test match, क्योंकि they will really have to, क्योंकि बुमराह के ऊपर you can't be dependent all the time. Yeah, and the third test match is at the Gabba, now or never, because अगर वो मैच वो जीत गए ना ऑस्ट्रेलिया, भाई WTC final hopes gone, done and dusted. And that is one of the games we really look forward to playing. Talking about the same WTC के table में, with this loss of India, Australia have moved back to the top spot and India have dropped down to third. That is really concerning, because as we were saying कि इंडिया को ये WTC फाइनल में पहुंचने के लिए एटलीस्ट ये सीरीज 3-1 या 4-1 जीतनी पड़ेगी. They तो can वही win बात. 3-2 also, but then they Hmm. will have to depend on Sri Lanka drawing a game, Yeah, or winning a game. But yeah, I wouldn't depend on anybody. I would try to get it done in the BGT only. yeah. Because देखो तो looking forward to this series, Gabba is one of the matches where Australia still have an edge, because by Gabba में Australia is Australia. But still, Mm. the fact that recently uh, West Indies beat them at the Gabba and we have beaten them at Gabba, that is the most important thing for us, right? Mm. So what will be important is how we play at the Gabba, because as you were saying before, MCG and SCG are anyone's game. वहां पे Mm. ऑलमोस्ट इवन प्लेइंग फील्ड रहेगा फॉर बोथ द टीम्स. एंड एससीजी में तो 99% ऑफ द मैचेस ऑलवेज गेट ड्रॉन, बिकॉज वहां बैटिंग ट्रैक अच्छा होता है, वहां बारिश बहुत आ जाती है ड्यूरिंग द न्यू Mm. ईयर्स टाइम. तो what is important for you is to win the GABA test. Right. Hmm. तो सही. That was our analysis of this test match. Next test match बहुत important होने वाला है. It will be basically like a must win for India, and hopefully Now they we can have to get look this. at this like a three-match series, honestly. Yeah, as Gavaskar said. So Yes. yeah, so hopefully our batting concerns can be rectified for the next match. हमारे bowlers can step up apart from Bumrah, and Hmm. it'll be up to the captain Rohit Sharma, the ex-captain Virat Kohli, and our senior player KL Rahul to step up. देखते हैं क्या होता है. हम तो देखते रहेंगे, हम आपको एनालिसिस पहुंचाते रहेंगे. आप भी देखना, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड Subscribe ऑफ करो. सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करते रहो हमारी जर्नी को एंड इंडिया की जर्नी को. So goodbye, guys. We